Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, I'm back with my session number 3. In today's session number 3, I am going to explain you a subjective. Subjective paper style is like that. Question number 1, answer the following question as per instruction. मतलब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो कुछ भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, राइट? कुछ भी हो सकता है, गिव एग्जांपल, आंसर इन वन वर्ड, कुछ भी जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, राइट? देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 लाइंस. मतलब बहुत बड़े भी क्वेश्चंस नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है, बट यू नीड टू राइट डाउन आंसर इन 2-3 लाइंस, राइट? देन आफ्टर आंसर इन ब्रीफ. उसके बाद मैंने पूछा है आंसर इन ब्रीफ मतलब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर है जो ऑलरेडी हम लोग CW में लिखते हैं, राइट? देन आफ्टर डू एज डायरेक्टेड. मतलब जो कुछ भी मैंने पूछा है मुझे जैसे मैंने आपको डायरेक्ट करूंगी उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. जैसे कि डायग्राम, लेबल द डायग्राम्स, कुछ भी पूछ सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी. बट किड्स, in today this session I am going to explain all these 3 questions. ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ना वो मैंने कहाँ से लिए हैं? CW के आंसर इन शॉर्ट और आंसर इन ब्रीफ में से, राइट? तो अगर हम सारे के सारे चैप्टर के आंसर इन शॉर्ट और आंसर इन ब्रीफ कर तो ये तीनों के तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ऐसा हुआ ना? और फिर लास्ट में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट? तो ये सेशन में मैं आपको सेम 1 की बुक में से चैप्टर नंबर 6, 7, 1, 2 ये 4 चैप्टर हम लोग करेंगे, राइट? और रिवीजन सेशन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 हो गए. तो ये 4 चैप्टर का फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं ताकि तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए. So now please open your class work chapter number 6. Answer the following questions, 1 or 2 sentences. मैं आपको इसलिए करवाऊंगी ताकि आपकी जब भी आप ये जो वर्कशीट अटेम्प्ट करोगे तब आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी नहीं. Done? Number 1. Why are leaves of green plants generally green? Most of the plants के plants जो होते हैं वो green color के होते हैं. क्यों? Leaves of green plants are generally green because of the presence of chlorophyll. Just because उसके अंदर chlorophyll presence होता है, उस वजह से सारे के सारे plants के कलर क्या होते हैं? Green color होते हैं, right? Now next, number 2. Name the parts of a leaf. Here we need to write down names of parts of a leaf. The different parts of a leaf are veins, leaf blade, and leaf stalk, right? Number 3. Why are leaves known as the food factory of a plant? Leaf को क्यों food factory of the plant बोला जाता है? Leaves are known as the food factory of a plant as they prepare food for the plant using water, minerals and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Because वो पूरे के पूरे plant का food prepare करता है. That's why we are calling it food factory of the plant, right? Now 4. What happens to the extra food prepared by a plant? Extra food जो plant prepare करता है उसका क्या होता है? The extra food prepared by a plant is stored as starch. वो as a starch store होता है. Then after we human beings या फिर other animals are taking as a food. Then after last one, how can we maintain balance in nature? मतलब हम nature में balance को किस तरह से maintain करेंगे? We can maintain balance in nature by protecting plants and animals, saving forest and wildlife. हम नेचर को इस तरह से बैलेंस करेंगे by saving plants, animals, forest and wildlife. इन सारी की सारी चीजों को अगर हम सेव करेंगे तो क्या होगा? नेचर को सेव कर लिया, right? Now next, describe the raw materials used in the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन-कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं? The raw materials used in the process of photosynthesis are carbon dioxide, water and mineral. ये सारी की सारी चीजें जो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है, राइट? नंबर 2, mention the functions of the leaf.
Here we need to describe functions of leaves, right? The functions of the leaves are as follows. Number one, it is the food factory of the plant. It prepares food for plant using water, minerals and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Number two, it helps the plant to take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis through stomata. राइट, उसको क्या कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प लेके वो अपने प्लांट का खुद का खाना बनाता है, राइट। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लीव्स। चलो नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ डज अ प्लांट यूज इट्स फूड। प्लांट्स अपना खाना किस तरह से यूज करता है। A plant uses the food it prepares in the following ways. Number 1, it is used to get energy to perform activities such as photosynthesis. It is also used for the growth of the plant. Plant की growth के लिए भी use होता है। Extra food is stored in the form of starch in the root stems or leaves. Extra food होते हैं वो भी अलग-अलग जगह पे store होते हैं, right? Now next, explain how plants and animals need each other. Plants और animals एक दूसरे के लिए एक दूसरे की क्यों जरूरत है। Plants and animals are dependent on each other in the following ways. Number 1, animals require oxygen to breathe. Plants give out oxygen. सारे के सारे animals को oxygen की नीड होती है, इसलिए plants जो होते हैं वो oxygen बाहर निकालते हैं। Number 2, plants require carbon dioxide to prepare food. Animals give out carbon dioxide when they breathe. हम क्या करते हैं, animals होते हैं वो breathe out क्या करते हैं, carbon dioxide, and plants want carbon dioxide to prepare its food, right? So they need each other. Then after number 3, animals and plants depend on each other for food. Animals eat plants as food. मतलब animals and plants एक दूसरे के ऊपर इसलिए भी डिपेंडेंट रहते हैं बिकॉज एक दूसरे के फूड के लिए भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट, when an animal dies, its body decomposes and mixes with the soil, thus enriching it. सारे के सारे एनिमल्स मर जाते हैं तो सॉइल को उसकी नीड होती है बिकॉज वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो जो सॉइल होती है वो बहुत ही मिनरल वाली हो जाती है, राइट। तो अच्छे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए एनिमल्स की भी नीड होती है। चलो नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हैबिटेट, गिव एन एग्जांपल। हैबिटेट क्या है, यू नीड टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। The place where a plant or any living thing that lives is called its habitat. Example, the habitat of a cactus plant is desert. कोई भी प्लेस होती है वहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी चीज ग्रो होती है तो वो उसकी हैबिटेट हुई। जैसे कि डेजर्ट में क्या होता है, क्या ग्रो होता है, कैक्टस। नेक्स्ट, what are deciduous plants? Give an example. Deciduous plants are plants that shed their leaves during autumn. Deciduous एक ऐसे प्लांट है जो autumn season में अपने leaves को shed कर देते हैं। Example, mango tree and pepper tree. Right? Next, write one adaptation of a fir tree. Here we need to write down one adaptation of fir tree. It is usually cone shaped. This shape helps to slide the snow off its branches. Here you can write any adaptation of fir tree, right? Here I thought कि fir tree एक adaptation होती है कि उसका shape cone shape होता है, उस वजह से वो कोई भी चीज जो होती है वो slide होके नीचे आ जाती है जैसे कि snow. Next, name 3 kinds of aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. ऐसे plants जो पानी में grow होते हैं उसको क्या बोलते हैं? Aquatic plants. The 3 kinds of aquatic plants are floating, fixed and underwater plants. Right? Chalo next. What are underwater plants? Name any one adaptation they have. Plants that grow underwater under the water surface are called underwater plant. Adaptation. Underwater plants have thin and narrow leaves with no stomata. Underwater plants जो होते हैं वो बहुत ही thin होते हैं और narrow होते हैं जिसकी वजह से उस लीव्स में स्टोमेटा भी होता नहीं है। चलो नेक्स्ट, describe how terrestrial plants adapt to their habitat, giving any 2 examples.
Plants that grow on land are called terrestrial plants. ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, राइट? जो लैंड पे ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. फॉर एग्जांपल मैंगो एंड बनियन. The two features of desert plants are the stems are green and have chlorophyll. These help in photosynthesis. And two, the stems are thick to store water. The two features of plants growing in the mountains are number one, most plants in the mountains grow tall and straight. The trees are usually cone-shaped. And another one is many of the trees have small needle-like leaves. Right? Now next, describe the adaptations of plants growing in saline coastal areas. Saline coastal areas में जो plants grow होते हैं उसकी कौन-कौन से adaptations हैं? In saline coastal areas, the water has high salt content. मतलब saline areas मतलब कि ऐसे plants जिसके पास मतलब जो ऐसे plants उसके आजू बाजू का एरिया जो होता है, water जो होता है वो बहुत ही salty होता है. For example, mangrove trees, coconut trees, right? Adaptations. Trees growing in these areas overcome the problem of salt content in the soil with roots that grow above the soil. These roots absorb gases directly from the air, hence they are called breathing roots. Next, these roots also help to take in water and other nutrients that are required for photosynthesis. Chalo, next question. Describe the adaptations of any two aquatic plants. कोई भी दो adaptations aquatic plants की we need to describe, right? Number one, roots of floating plants are not fixed but hang in water. These plants are light and small with spongy stems. These helps them to float on water. For example, duckweed. जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसके जो रूट्स होते हैं वो हैंगिंग रूट्स होते हैं, उसकी स्टेम होती है वो बहुत ही स्पॉन्जी होती है. इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली फ्लोट होते हैं. एग्जांपल डकवेड. नेक्स्ट, fixed aquatic plants have thin, long and hollow stems. They have broad leaves that can float on the surface of the water. For example, lotus. लोटस को आपने देखा होगा ना पानी में फ्लोट करते हुए, बिकॉज उसकी जो होती है स्टेम वो बहुत ही थिन होती है, लॉन्ग होती है और होलो स्टेम होती है. उस वजह से उसके लीव्स और पौधे इजीली पानी में फ्लोट कर पाते हैं. राइट? लास्ट वन, राइट अ नोट ऑन स्पेशल एडेप्टेशन इन प्लांट्स. स्पेशल एडेप्टेशंस भी होती है प्लांट्स में, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खा के अपना मतलब वो अपना खुद का खाना नहीं बनाते बट इंसेक्ट को खा के सब कुछ कर दे. राइट? प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स, लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स. उसके लीव्स भी उस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि वो इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर सके. देन आफ्टर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, plants that cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals. Such plants are called such plants do not have chlorophyll. ऐसे plants जिसके पास chlorophyll नहीं होता है तो बट नेचुरली वो अपना खाना नहीं बनाते, बट जो ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनमें से वो अपने आप को फीड कर लेते हैं. राइट? फॉर एग्जांपल इंडियन पाम एंड कोरल रीफ. चलो, नाउ नेक्स्ट chapter number 1 of semester 2's book, reproduction in animals. Right? Question number 1, what are the two ways through which animals reproduce? हम सबको पता है तो कौन से ways हैं जिसके through animals reproduce होते हैं? Number 1, reproduce by laying eggs. Another one is reproduce by giving direct birth to their young ones. Right? Done? Now next, name any 3 animals that reproduce by laying eggs. ऐसे 3 animals के names लिखने हैं जिसके through animals reproduce होते हैं. The 3 animals that reproduce by laying eggs are birds, snakes and frogs. Next, what happens to the tadpole before growing into an adult frog? क्या होता है tadpole के साथ जब एक बच्चा होता है, मतलब ग्रोइंग से tadpole के बीच में, adult frog के बीच में. Before growing into an adult frog, the tadpole loses its tail. वो अपनी tail को lose कर देता है, खरी जाएगी नहीं, right? Next, what happens to the caterpillars before it becomes a butterfly? Butterfly बनने से पहले caterpillar
से के साथ क्या होता है? The caterpillar shades its skin and becomes a pupa. The pupa then changes into butterfly. Caterpillar अपनी skin को shade कर देता है, निकाल देता है. Then after वो किस में convert हो जाता है? Pupa में convert हो जाता है. और then pupa किस में convert हो जाता है? Butterfly में. Done? Now last one. Write any two features of a mammal. Here we can write any two features of mammal. You can write mammals have a well-developed brain, and mostly mammals have hairs on their body. Mammals feed on their mother's milk. Right? So ऐसी सारी चीजें you can write anything. The two features of a mammal are: number one, the young ones of the most mammals feed on their mother's milk. Number two, most mammals have hairs on their bodies. Now you can write any one. Okay. Now, draw and describe the structure of an egg. Here you need to draw and describe structure of an egg, right? Here I cannot show you drawing, but I can explain you, right? The thin and hard protective covering of an egg is called the eggshell. The yellow part of an egg is called the yolk. The jelly-like substance present inside an egg is called albumen. Done? Chalo, next. Describe the life cycle of a hen. Here we need to describe life cycle of hen. The life cycle of a hen. Point number one. The mother hen lays eggs in nest and sits on the eggs to keep them warm. सबसे मदर hen होती है वो eggs को देती है और उसके egg को warm करने के लिए उसके ऊपर बैठती है. Number two. A young growing baby called the embryo starts developing inside each egg. उसके ऊपर warmness मिलती है, फिर उसके बाद अंदर जो baby bird होता है वो धीरे धीरे grow होना start हो जाता है. उसको क्या बोलते हैं? Embryo. Then after third, once the embryo develops into a chick, the chick breaks the shell and comes out. Embryo develop होना start हो जाता है. Then after क्या होता है कि वो किस में convert हो जाता है? Chick में convert हो जाता है, right? The chick then grows into a hen. Then chick जो होता है वो किस में convert हो जाता है? Hen में convert हो जाता है, right? Now next, what is metamorphosis? Describe with an example. Metamorphosis क्या है? वो मैं example के साथ describe करना है. A marked change in appearance, character or function during the life cycle of some animals is called metamorphosis. कोई भी चेंज आता है कोई भी एनिमल में तो वो मार्क होता है, मतलब वो चेंज दिखता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस. बटरफ्लाई शोज मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. बटरफ्लाई शो करता है. देन आफ्टर टेडपोल्स शो करते हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. डन. नाउ लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 2, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स. Question number 1. Write any two adaptations seen in terrestrial animals. Here we need to write down two adaptations which is seen by us, right? The two adaptations seen in terrestrial animals are: number one, they usually have legs to move on land. Terrestrial animals मतलब जो land पे रहते हैं तो usually वो land में क्यों रह पाते? क्योंकि उसके पास well developed legs है. Then after, most of them breathe through their lungs. Most of the terrestrial animals have lungs to breathe in, breathe out, right? Next, what are flightless birds? Give an example. Flightless birds क्या है? वो लिखना है और with example लिखना है. Birds such as ostriches and kiwis cannot fly. They are called flightless birds. ऐसे बर्ड्स जो बर्ड्स में तो आते हैं बट वो उड़ नहीं सकते, तो उस टाइप के बर्ड्स को क्या बोलेंगे? फ्लाइटलेस बर्ड्स. नेक्स्ट, राइट 2 points of difference between herbivores and carnivores. Herbivores are plant-eating animals, carnivores are flesh-eating animals. Herbivores have sharp biting teeth and strong biting teeth. Carnivores have sharp cutting teeth for hunting and tearing out the flesh of their prey. Done. Next, what are parasites? Parasites क्या है? Parasites live inside or on the body of other living organisms. They take food from the organisms that they live in and also harm them. Example wise, ये जो parasites होते हैं वो किसी भी organism की body में रहते हैं और
उनमें से ही अपना खाना वो ढूंढ के खाते हैं, जैसे कि लाइस। डन। લાઈસ એટલે ખબર છે જૂનું થાય કેવું કરે આપણા બોડીમાંથી જે ફૂડ લે એટલે આપણે કેટલું ઈચિંગ કરે, રાઈટ? ચાલો નેક્સ્ટ. Why do animals show camouflage? Animals camouflage क्यों शो करते हैं? Camouflage helps animals to hide themselves from their predator. ये वो जिस प्रीडेटर होते हैं जिसको वो मार के खाने वाला होता है, उस एनिमल से उसको हाइड करके मतलब बचाने के लिए वो अपने आप में कैमोफ्लेज शो करते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट. Using any two examples, describe how animals are adapted to their habitats. Number 1, terrestrial. Terrestrial animals usually have legs to move on land. Most of them breathe through their lungs. Number 2, aquatic. Aquatic animals have fins or limbs suited swimming. Most aquatic animals such as fish and crab breathe through gills. Next. Describe how animals are adapted based on their eating habits. Eating habits के अकॉर्डिंग हम कैसे पता चलेगा? जैसे कि herbivores है. Animals can be categorized into 5 major groups based on their eating. Number 1, herbivores. Number 2, carnivores. Number 3, omnivores. Number 4, scavengers. And number 5, parasites. Herbivores. Herbivores have sharp teeth like horse and goat. Carnivores have sharp cutting teeth, for example, lion and tiger. Omnivores that eat both plants and animals have sharp cutting teeth, strong grinding teeth, and sharp tearing teeth, example, bear and human. Scavengers have broad and strong teeth, example, hyena and felon. Parasites are animals that get food from the host and cause harm to it, example, lice and flea. Done? Last one. Describe how animals are adapted for protection. अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों ने कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की है? Animals such as deer and cheetah have strong legs. These help them to run fast. The body color of animals such as chameleons, zebra, and polar bear matches with their natural surrounding. This makes it hard to spot them in surroundings. Number 3. Animals such as turtles and snails have shells to protect their soft bodies. Number 4. Animals such as porcupines have spines to protect themselves. मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो इसके पीछे स्पिन्स मतलब कांटे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को लगते हैं तो उस वजह से वो हंट हो पाते नहीं. ऐसे एनिमल्स है जो अपनी बॉडी को कलर चेंज कर लेते हैं जैसे कि कैमेलियन. ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी कलर ऐसे ही होते हैं जिसको प्रीडेटर को देखने में कंफ्यूजन हो जाती है जैसे कि ज़ेब्रा. कोई एडेप्टेशन ऐसी होती है जिसको भागने में हेल्प करती है. So kids, here we completed revision session number 3. तो हम लोगों ने 4 चैप्टर के ये 3 क्वेश्चन किए हैं, राइट, सब्जेक्टिव के. बाकी के 4 चैप्टर की ये 3 और प्लस ये 1 वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी. आई होप सो यू अंडरस्टैंड माय एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल रिवीजन, राइट? चलो, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.